So I hope you guys are making notes out of this based on the formats, nature of information, time period, all these stuff related towards financial accounting and management accounting. Up in sub में, okay, let's just come towards this test understanding. Which of the following statement is or are correct? Variance analysis enables a business to identify why the actual financial results were different to those, why it was different to those predicted by the budget. Management accounts follows a set predetermined format as laid out in relevant accounting standards. Answer is BC तो out है. A होगा, check करो. And why is it A? एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो वेरिएंस है आपको ये मालूम हो जाता ना कि क्यों वेरिएंस हुआ है, why there was a variance and stuff, and that's the reason. आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं. देखो, if in this question, sorry, in this option, variance only, okay, variance reports, okay, variance reports enables to business to identify अगर हुआ तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाता. वेरिएंस एनालिसिस, एनालिसिस करना मतलब कि क्यों हुआ ये, कैसा हुआ ये, all these stuff of questions you are going through, then you were able to identify why actual financial results were different towards those predicted by the budget. ठीक है, अगर खाली वेरिएंस रिपोर्ट्स अगर है तो फिर खाली वेरिएंस रिपोर्ट तो क्या करना, उसको एनालाइज करना जरूरी है. And here it goes with the option. Yes. Now comes with functions of the treasury. Treasury का काम क्या होता है? Working capital management, cash management, financing, foreign currency fluctuations, taxations के rules regulations को के साथ खेलना, के साथ comply करना. I want you guys to just write down the side items, not all those stuff. कैश को प्रॉपर्ली मैनेज करना, बिजनेस के कैश को पूरा मैनेज करना, दैट्स वन की फंक्शन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट. सो बेसिकली इट इज कैश मैनेजमेंट ओनली. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है मतलब वहां पे डेली का कैश कितना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं. फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हाउ मच कैश यू नीड इन द बिजनेस. फॉरेन करेंसी, हाउ मच फॉरेन करेंसी रेट्स, when is the right time to exchange and stuff, that is foreign currency. And tax, how are you going to manage it, how are you going to pay it in the most profitable manner. Okay, moving forward now. Now foreign currency. Now there's a really big example here. What I want you guys to understand, let us just take our own example, or you can take this example जैसे कि आप लोग को एग्जाम फी पे करना है. Yes or no? Exam fee for ACCA knowledge level is 107 pounds. और पता नहीं क्या होता है ACCA के पास, इन्फ्लेशन सही भी हिट करता है या नहीं करता नहीं मालूम, लेकिन ये एग्जाम की फी हमेशा बढ़ते रहती, हमेशा बढ़ते रहती. ओके, I have seen this examination fee around 70 pounds also. Okay, 70 pounds एक एग्जाम की फी होती थी, फिर जाके वो 80 पाउंड हुई, 80 पाउंड से फिर 90 पाउंड हुई. ठीक है, 90 पाउंड से फिर 105 हुई,
फिर 105 से फिर 107। बहरहाल हर लेवल पे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। The point here is this 107 which you guys have to pay is not that 107 you take out of your pocket and pay. You have to convert it into Indian rupees. Now, how much is it? What is the exchange rate today? Exchange rate क्या है पूछा मैं, total amount नहीं. Are you sure? हाँ, ऐसे श्योर रहने पे क्या बताऊं आप लोग को. 104.35 है सर। कहाँ गया हमारा GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और हमारा सबसे बड़ा रुपया 104.35। मतलब आप लोग का एग्जाम फी कितनी हो गई? 107, 11,165 तो इधर ही हो गई। उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स चार्जेस करके बढ़ते जाती फीस। Now, when you decided somewhere around 11,000 is going to be my fee, but at the end of the day, you're paying more. And why you're paying more? That 107 is not changing. 107 is there. It's still there. But the exact money which is going out of your pocket, it is increasing. And that's just because of these exchange rate. So when do you try to, plan it properly so that अब जैसे कि क्या होता है मालूम, स्वैप करते हैं। अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अगर सपोज आप किसी को फाइंड आउट कर रहे हैं यूके में, ब्रिटेन, इंग्लैंड में, आपके कोई दोस्त भाई बंधु है, तो आप उनको बोल रहे हैं कि अरे यू नॉर्मली सेंड मनी हियर, राइट? तो व्हाट इज योर एक्सचेंज रेट? नाउ सी दिस, व्हाट्स हैपनिंग, you were going to make this payment of 107 pounds. So basically you're making the payment in pounds, so rupees se pounds convert karke. Let's just go the other way. Okay, if someone from London is sending back money home for some other purpose, what is his charges? Will he get this exact amount? No, he'll not get this 11,165. He will get somewhere around 10,500 or something less than that. Why? Because there is again exchange rates. So why not you connect with some person, instead of you paying 11,000 and change something, it will go 12,000 also, the forex charges. Instead of you paying that much, you'll say them, whoever account you say I pay 11,000 there, and you make that payment of 107 pounds. He'll also be happy, you also be happy. But getting that connect on that particular right time is a bit not possible. I hope you guys are understanding. तो फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क दो भी तरफ है, yes or no, that the price is going to fluctuate up and down, something like this. How do you mitigate it? How do you stop to it? उसके लिए we have a separate chapter only, और वो आप लोग को होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अभी नहीं। दैट इज कॉल्ड हेजिंग। अभी के लिए तो बस ये मालूम कर रहे हैं कि just see this example. For example, assume a UK company buys goods costing $1 from a US company. The goods are due to be paid on 31st March. The exchange rate is $1. 1 pound is equals to $1.5. So the goods will cost this much. However, if the exchange rate changes, then it will be this much. So there is a risk of change. Okay. The company can manage this risk by entering into a forward exchange contract that is called a hedge. मतलब हम एक forward exchange contract में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि the parties to the contract are known. These are two different companies. So whatever it may be, this is our exchange rate going to be. You enter into a contract, no matter what the prices would be.
The rate in the forward rate contract will depend on what the market thinks will happen to the exchange rates. Let us say, for example, that the company can enter into a contract to purchase 1 million at a rate of 1.48. The company's cost in sterling is then fixed at this amount only. So you can enter into a contract. ये एक तरीके का hedge है. It's kind of a hedge, or you can also call it derivative, which we are going to deal with later on in your upcoming subjects, not only in this. Then management of working capital, how much is your current assets, your current liabilities, what's the cash, how do you manage that cash? That is management of working capital. Who does this? The treasurer, not the management accountant, the treasurer. Then there are advantages in holding in the large or small amount of funds. Now, you guys tell me, people who hold lot of amount of cash in hand rather than cash at bank, what are the advantages and disadvantages? जैसे कि कैश सेव कर रहे हैं आप, अब जैसे कि सचिन और धोनी बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर आप अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं तो आपकी बच्ची तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपके सेव किए हुए पैसे नहीं बढ़ेंगे अगर आप खाली सेव करके उसको रख रहे हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, आपकी बेटी के ग्रोथ के साथ आपके पैसे भी ग्रो करेंगे, उस वक्त के जरूरतों के हिसाब से ये पैसे ग्रो करेंगे। तो that is a really good marketing tool. Okay, you are hitting someone at their insecurities कि आप पैसे सेव तो हो जाएंगे लेकिन उतनी जरूरत के लिए तो नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर कुछ शादी ब्याह करना है तो 20-25 लाख रुपए तो चाहिए, वही 18 साल के बाद आपको शादी करना है किसी की तो फिर 1.5-2 करोड़ चाहिए। I'm just giving a hypothetical example. Okay, I'm not saying that that's going to happen, but just think about it, that will be the situation based on inflation. So you should have your expenses and all that matching only. Okay. Then moving forward, keeping large balance and a small balance, you guys can just see it. Inventory, customers are happy since they get immediately good. And this inventory, large balance and small balance, we have also done it in materials chapter. अगर हम ज़्यादा balance रखेंगे तो फिर we'll have that holding cost, but there will be less stock out cost. और अगर हम small balance रख रहे हैं तो फिर we have stock out cost as a loss. Yes or no? Trade receivables, payables, cash in hand, trade payables. ज़्यादा रखना है या कम रखना, that's a decision to understand. Okay, that management must decide. Now, conservative managers will have a policy of holding a large working capital balance, while aggressive management will hold low working balance. Which of the following is the consequences of an aggressive management policy? Aggressive से मतलब एक भी रुपया अपने जेब में नहीं रखना, सीधा पूरा मार्केट में इन्वेस्ट करके हर जगह चैनलाइज मोबिलाइज कर लेना। Now you tell me, what would be the increased risk for? Sir, increase bad and doubtful debts. मतलब आप बेचते जा रहे क्रेडिट पे, that can be a consequence.
ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो इन्वेंट्री खराब हो जाती है, increase inventory obsolescence. Good question. Exam का क्वेश्चन है, हर सिचुएशन में ट्राई करिए aggressive management policy है। बताओ, I don't want to answer. Yes, any answer? Any answers which you want to give that? Okay, this should be the answer. Ansar, you said increase bad and doubtful debts. Anyone else Yes, with sir. any other answer? बताओ। Tech. रीजनिंग देखो, हर एक के पीछे रीजनिंग आ रही है कि एक एग्रेसिव पॉलिसी का मतलब क्या है कि जैसे कि कैश हाथ में रखना नहीं, रिसीवेबल्स बढ़ाओ, कैश हाथ में मत रखो, ज्यादातर इन्वेस्ट करो, फिर पेएबल्स को जो सो काइंड ऑफ डिले करो या फिर जल्दी जल्दी खत्म करो पेएबल्स को। इंक्रीजेस ऑफ इन्वेंट्री आउटेजेस, ज्यादा परचेज मत करो, जस्ट कीप इट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, एग्रेसिव के मेरे को सब मालूम है। कंजर्वेटिव पर्सन क्या करता, अरे सेल ज्यादा होता होगा बोल के ज्यादा लेकर आ जाता सामान वो, दैट्स अ कंजर्वेटिव अप्रोच। वेयर एज an aggressive approach, he will not buy more and more goods. He said whenever we get demand, we will source it at that time, we'll get it at that time. तो उससे क्या हो जाता, इन्वेंट्री आउटेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक आउट, और स्टॉक आउट लॉस भी हो सकता है आपको। ठीक है। नाउ evaluating and obtaining finance, basically you are getting money for the business. Either you can get it from debt as a loan from someone, there are various sources of getting a debt. उसके लिए क्या करना रहता, आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करना रहता, आप समवेयर एज सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी को देखकर यू वुड बी, और दैट बिजनेस स्टेबिलिटी को देखकर डेट मिल सकता है। देन इक्विटी, दिस इन्वॉल्व्स सेलिंग अ स्टेक इन द बिजनेस to raise cash, मतलब you are giving up some portion of your business to get that cash, that's equity. Generally the treasurer and finance function will weigh up which source of finance best suits up as the circumstances of business. अब जैसे कि देखो equity में when you are raising funds like this, what will happen, control will go off, and whereas if you are doing it on debt, then control won't go off, it will be based on loans only, based on your track record, historical track record only. Okay. Now, here we have a question. Which of the following statement is correct? AHG PLC needs to raise 50 million pounds to launch a new product. It hopes new product will be a success, but the returns are highly uncertain, with a 30% chance that the launch will be a failure. 30% chance failure के है तो 70% chance success की भी तो है ना। The product is expected to sell for around 5 years.
AHG is currently trying to decide whether the launch should be financed using a 5-year bank loan or through raising equity. Which of the following statement is correct? Equity will be cheaper as dividends are allowed against tax. AHG should choose equity due to the risky nature of the project. Equity should be chosen as AHG needs a permanent increase in its finance. Debt usually does not require security, meaning it may be easier for AHG to raise. Okay. लेकिन यहाँ पे फिर से सवाल पढ़ेंगे हम. It needs to raise 15 million to launch a new product and hopes that the new product will be a success. But the returns are highly uncertain with a 30% chance that it will be a failure. ऐसा कुछ वो लोग दे रहे हैं कि did it say somewhere that they need a permanent increase in its finance? Where? In option C only they are saying that. Equity will be cheaper as dividends are allowed against tax. ये तो आप लोग को पढ़ाया ही नहीं गया है, तो कैसा मालूम होगा आपको ये? डिविडेंड मिलते हैं लेकिन अगेंस्ट टैक्स का मतलब उनको टैक्स डिडक्ट करने के बाद मिलते हैं आपको डिविडेंड. तो टैक्स डिडक्टेबल है. Should choose equity due to the risky nature of the project. ये भी हो सकता. Debt usually does not require security, meaning it may be easier for AHG to raise. अब चेक करो. What do we say? B or C? B. क्योंकि बाकी के ऑप्शन जो है थोड़ा सर के ऊपर से भी जा रहे हैं और रिलेट भी नहीं कर रहे इस टॉपिक से. परमानेंट इंक्रीज वो बता नहीं रहा है. डेट जो है इतना भी आसानी से मिलता है नहीं बगैर सिक्योरिटी के. Equity will be cheaper as against tax. No. Let's move forward. So the answer is now determining business tax liabilities, tax avoidance and tax evasion. Now दो तरीके हैं. आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं और फिर टैक्स को इवेड कर रहे हैं. ठीक है. Tax avoidance, tax evasion is one of the same thing only. Basically, you are not paying tax. Okay. Avoidance or evasion is basically the same thing. लेकिन एक ऐसा रहता है कि legally you can do it. If you do it, मतलब if you are going to evade tax, गलत नहीं है वो, लेकिन लोगों की नजर में आ जाते हैं आप. अब जैसे कि यहाँ देखो आप. Tax avoidance is the legal use of the rules of the tax regime to one's own advantage in order to reduce the amount of tax payable by means that they are within the law. Whereas tax evasion is the use of illegal means to reduce one's tax liability, for example, by deliberately misrepresenting the true state of your affairs to the tax authorities. मतलब झूठ मूठ बोलना, all those stuff करना, उसको बोलते हैं tax evasion. लेकिन अपना दोस्त है ना, बड़े बड़े टावर है उसके पूरे यूएस में 7-8 स्टेट्स में. एक बार उसके टावर को जाने का मौका मिला था लेकिन गया नहीं मैं. कौन है मेरा दोस्त, पहचानो? बड़े बड़े टावर है उसके यूएस में फैले हुए. शिकागो में भी है. मैं उसके टावर के अंदर अभी ऐसे जाने वाला था लेकिन गया नहीं. उसका नाम टी से शुरू होता. कौन है मेरा दोस्त? हाँ.
अरे इतने सारे कीवर्ड्स दे दिया तुम लोग को मैं। यूएस का सदस्य है वो। क्या है? अरे पहचान लिए तो, डोनाल्ड ट्रम्प। तो मेरा दोस्त ट्रम्प, पर व्हाट डिड ही डू? ही डिड टैक्स अवॉइडेंस। उसके ऊपर केस चल रहा था ना कि यू हैव डन ऑल दिस टैक्स अवॉइडेंस एंड ऑल दैट स्टफ। आप जो है so what did he say? That I have used legal means to, I have used legal means to avoid my tax. I did not do anything wrong. That's what Trump says. That is something which came against his agenda of his what that call that political regime. अभी देखो ना, फिर इलेक्शंस होंगे, मेरा दोस्त ट्रम्प आ जाएगा वापस। This all thing is sarcastically said. Now, the directors of a company have a duty to their shareholders to maximize the post-tax profits. अब टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए आप बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि देखो, you have to take in all those expenditures which can be taken into account. You should not just के अब जैसे कि देखो, let me just talk to you tax. One short example of tax. अब जैसे कि आपकी इनकम हो रही है $1 लाख पर एनम। व्हाट हैपेंस इज, इनकम टैक्स जो होता है, मतलब सैलरी टैक्स, ओके, वो सीधा 1 लाख पे चार्ज हो जाता। ठीक है, वेयर एज वो सैलरी पे चार्ज होता है, वो चार्ज होने के बाद फिर उसके डिडक्शन होते हैं। That's another case, but here we are talking about businesses. Let's just talk about business. Suppose your inflow of cash is 1 million. So is the tax levied on this 1 million? Answer is no. Minus all your expenses, there will be then profit. Okay, ये प्रॉफिट पे लगता टैक्स, पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, वो अलग लगता सेल्स टैक्स, दैट काउंट्स इन, दैट गोज आउट, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा खेलना होता है। खेलना मतलब बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना होता है। There will be many other things which you can include in the expenses side, but they omit or they forget to include it there. उससे क्या हो जाता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ जाता। अगर वही एक्सपेंसेस को प्रॉपरली अगर एंटर करें, एक्सपेंसेस बढ़ गए, प्रॉफिट कम हुआ, टैक्स कम हो जाता। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेंसेस में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश है। जैसा कि एक सबसे प्यारा एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन। कितना प्यारा एक्सपेंडिचर है वो। एक्चुअली जाते क्या पैसे आज जेब से नहीं जाते, लेकिन आप उसको कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन में मैनिपुलेशंस हो रहे बोल के रूल आ गया कि डेप्रिसिएशन दिस मेथड ओनली यू हैव टू यूज फॉर टैक्स पर्पसेस, यू कैन नॉट यूज अनदर मेथड फॉर टैक्स पर्पसेस। अगर आप यूज कर ले रहे हैं आपके बिजनेस पर्पस के लिए तो कर लो स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन जब टैक्स पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो यू शुड यूज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड जब आप यूज कर रहे हैं तो आपकी टैक्स वैल्यू कम रहती। एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो आपके टैक्स वैल्यू ज्यादा, सॉरी डेप्रिसिएशन वैल्यू ज्यादा रहती। जस्ट थिंक अबाउट इट, डेप्रिसिएशन वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो टैक्स वैल्यू कम होती। This is one expense. There are many more expenses which they talk about, but we don't have that much time to talk about. तो tax avoidance का क्या है मतलब? Legal ways to not give tax, and then tax evasion का मतलब illegal ways to avoid tax. कौन सा punishable offense है? Tax evasion. Tax avoidance तो फिर भी आप लोग जो है सो अच्छे खासे तरीके से कर रहे हैं। Okay, so we have come towards the end of this chapter. But you see, there are so many good, nice test understanding for you.
टैक्स इवेजन अवॉइडेंस पे भी बहुत कुछ बात कर रहे हैं. So you guys can actually go through it by today. Try finishing this off. अच्छे से कर लो आप ये and it will be done. Okay. And tomorrow we'll be starting this, which is financial systems and procedures. A very important chapter. So what I'll do is I'll just end this session. I'll send you the new link for management accounting.